आई थिंक अब ये ऑनलाइन हो चुका है, राइट? सो फर्स्ट वेलकम टू माय चैनल। दोबारा मैं आ गई आपको साथ आप लोगों को बताने के लिए अबाउट दी DHA, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ उन पे सेशंस कर रही हूँ, वो लाइक लाइव सेशंस ले रही हूँ जिसमें जो मुझे ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। सो मैंने कहा फर्स्ट गो फॉर दैट, देन फर्दर वॉट एवर जो आप क्वेश्चंस करते हो मैं कोशिश करूंगी टाइम निकालूं और चीजों पे बात करूं। सो मेरे चैनल पे जो नए हैं और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूवरशिप तो आ रही है लेकिन सब्सक्रिप्शन उतनी नहीं आ रही है। सो बेसिकली आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक सपोर्ट करती है, मुझे अप्रिसिएशन करती है, तो टू बी कंटिन्यू ऑन दिस पाथ। थैंक यू। ओके, सो आज हम बात करेंगे DHA, MOH, DOH। व्हाट इज दैट, क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी, और क्या इनका फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट वी लाइक, कितना एक्सपेंस आता है, कॉस्ट कितना है, एग्जाम में क्या आता है, मटेरियल, द मैक्सिमम। अच्छा, मैंने ये सोचा और मैं सोच रही थी एक वीडियो रिकॉर्ड करके बनाऊं या फिर सेशन करूं और उस पे हम अपलोड करें। देन आई कम टू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई कांट कवर इन द वन, although I'll try maximum कि मैं आज आपको एटलीस्ट ब्रीफ पूरा दे सकूं। So if required we will do another session, so which will take time, but anyway let's start with the DHA. Okay, what is DHA? Recently basically मैं मूव हुई हूँ दुबई की तरफ, और तो काफी लोग, DHA क्या है? दुबई हेल्थ अथॉरिटी एग्जाम। ओके, दिस इज जस्ट अ लाइसेंस एग्जाम टू वर्क इन अ दुबई हॉस्पिटल, राइट? तो अभी जैसे लेकिन यहाँ पे ना 7 स्टेट्स है, जैसे हमारे पास है तो यूएई, यूनाइटेड अरब जो है हमारा, उसमें यूएई में एमिरेट्स में 7 स्टेट्स हैं, जिसमें दुबई एक स्टेट है जिसके लिए सिर्फ ओनली फॉर दुबई इज DHA एग्जाम, राइट? दुबई हेल्थ अथॉरिटी। सेकंड आ जाता है हमारे पास DOH, विच इज फॉर अबू धाबी। थर्ड इज MOH, विच इंक्लूड 5 स्टेट। कौन कौन से? रासल खेमा हो गया, शारजा हो गया, और फुजैरा हो गया, और भी उमल कुनैन हो गया, और भी एक है जो अभी याद नहीं आ रहा, अजमान जहाँ मैं रह रही हूँ। सो ये 5 स्टेट के लिए है, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं, दिस इज लाइक होल द यूएई स्टेट्स विच में अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्जाम की डील होती। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा देना चाहिए, राइट? तो होता ये है कि आपको अगर आपकी प्रायोरिटीज है और आप चाहते हो कि हम इस पे करेंगे, लाइक वेयर यू वांट टू गो, लाइक इफ यू वांट टू वर्क इन दुबई ओनली और सम आपकी प्रेफरेंसेस हैं, तो फिर आपको DHA देना है। इफ यू आर फाइन विद एनीथिंग, लाइक कोई भी स्टेट ऑफ फुजैरा है या किसी के कोई रिलेटिव्स हैं, ऑलरेडी यू नो अबाउट एनी स्टेट, सो यू वांट टू गो देयर, देन MOH है, और अबू धाबी के लिए DOH है, राइट? अच्छा, डिफरेंस क्या है इनके एग्जाम्स में? DHA और MOH मोर एंड लेस सेम है, उसमें इतना कोई ज्यादा उनका मटेरियल का डिफरेंस नहीं आता। DOH इज डिफरेंट। अबू धाबी का एग्जाम थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि अबू धाबी इज कैपिटल ऑफ यूएई, सो इसलिए नॉट एक्चुअली, बट उसमें एक्चुअली थोड़ा एग्जाम का डिफरेंस होता है। और वहाँ की जॉब जो आपकी सैलरीज है वो थोड़ी बहुत बेहतर होती हैं दुबई और उधर से, लेकिन देन अगेन वहाँ के एक्सपेंसेस होते हैं, तो मोर एंड लेस आपको सेम ही पड़ता है। थर्ड चीज आ जाते हैं, ये हो गया एग्जाम्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सा कहाँ देना के लिए क्या है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन आता है, क्या DHA MOH में कन्वर्ट हो सकता है? क्या MOH DHA में कन्वर्ट हो? क्या DOH MOH मतलब इंटर चेंजेबल है? नहीं है। यस, दीज 3 एग्जाम्स आर इंटरचेंजेबल। For that MO आप जो DHA देते हो, when you are giving DHA you can convert without any experience, just you cleared your DHA exam and then you can convert it to MOH. But for converting into DOH, Abu Dhabi के state के लिए, you need to work experience in the UAE 6 months. That is a requirement. Without that you can't change into like this. Okay, so ये है। अभी अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इज लाइक द चेंजेस। तो मतलब अगर आपने सोचा, लाइक मैंने जो किया, लाइक व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन DHA दैट कन्वर्टेड इनटू MOH विदाउट एनीथिंग। और इन एग्जाम्स की एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी इज लाइक DHA इज वैलिड फॉर 1 year, MOH वैलिड फॉर 5 years, राइट? सो सेम फॉर DOH, बिकॉज DOH का मैंने इतना कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, तो आई हैव लेस नॉलेज ओवर, आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू ऑन दैट पॉइंट। Okay, so let's go for the DHA exam. What is actually the requirement of these exams? How, like, who can give this exam?
Simply, MBBS doctor or any if like I'm talking about doctors, so I'm telling about them. So as a GP, if you want to enter in the UAE and work in the Dubai or in the UAE states, other states, so what you need to do is simply give the exam. Requirement is if you should be qualification should be done, house job should be done, and after doing house job or internship of 1 year, you need 2 year experience. Yes, this is a requirement. Without that, they will not. There's no like हम जैसे प्लैब देते हैं, यूएसएबली देते हैं, उसमें हमारी कोई उनके लाइसेंस के लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हाउस जॉब की या पोस्ट हाउस जॉब वर्क एक्सपीरियंस की, बट हियर वी नीड. Okay, so people who have done MBBS, who have done their प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन और उन्होंने अपना इंटर्नशिप कर लिया है, they need to complete 2 year experience and after that they can apply for this exam. I think up till now we are clear on this point. So next हम आ जाते हैं, ये इनकी requirement है, experience भी. और next आते हैं verification of document. These are the comes in the requirement for DHA exam. Okay, so अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसलिए इजी करके स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ. फॉर DHA documents verification they need, because आप कहीं भी किसी भी country में जाते हो, when you go they want need to like verify our documents, that our degree, our house job, our internship, our experience is actually the real one or fake. It's a requirement of everywhere if you go. So they need everyone have their own policies and their bodies they which recognize and verify our documents. So क्या है for DHA a document which is called data flow. That is yet another process. So I will try to briefly explain you that as well. What is data flow? Data flow basically verification of documents, our basic medical degree, our experience, our internship. They verify it. Okay. So what we need to do is for DHA exam, if you want and you have made your mind that, okay, I want to move UAE and I want to go that DHA exam, for that, should I go for the what we called DHA exam? Yes, of course. Should I go for any verification data flows first? Okay, DHA exam के लिए data flow, you can do first data flow, verify the documents, and then go for the exam. Or otherwise, you want कि मेरा verification भी साथ में चलता रहे और मैं exam की तैयारी exam भी दूँ, you can do that. Even though you can first opt for exam. I want to clear my exam and I want to see if it's clear. Then I can go for verify my documents. It's all your choice. पहले भी कर सकते हैं, एग्जाम के साथ भी कर सकते हैं, एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं. लेकिन MOH और DOH वाले ये इस चीज को फॉलो नहीं करते. What they do is they want data flow verification of document before attempting the exam. Right. So before attempting the exam. तो उसमें है हमने डेटा फ्लो पहले करवानी है. इवन दो डेटा फ्लो इज आल्सो लाइक कन्वर्टेड टू DHA एग्जाम के लिए अगर मैंने डेटा फ्लो करवाई है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू MOH डेटा फ्लो एज वेल. सो हमें अलग से किसी के लिए डेटा फ्लो करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, आई थिंक सो फार वी आर क्लियर दिस थिंग. सो अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेटा फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें करवानी है. So for that, I'm going to tell you that what is there are two packages. One package which is 935 AED dirham, which is like Pakistani 70,000 to 71,000 cost. So this is the cost now we are talking about. So वो उसका like उसमें उस पैकेज वन में क्या है, डिग्री आपकी वेरीफाई हो जाएगी और आपके जो डिग्री के साथ है 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, which is one from the house job like internship certificate and one is from the post 2 year experience which you are going to like getting it. So that should get verified. And then one is other package which is 1235 or 1235 dirhams, which is Pakistani 93-94,000. उसमें क्या होगा कि आपको है ना like 2 degrees, like especially people who want for post graduation qualification or any other extra experience you want to add the verify them. Like किसी ने कोई अल्ट्रासाउंड का कोर्स करा है, किसी ने कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल करा है डियोलॉजी में, anything you extra you want to verify that because you want to further you want to use it, then additionally like this is a package you choose and any other more like 2 degrees हो गई आपकी, 2 experience certificate हो गए same like package 1, then still you have certificate you want to verify them, then they cost 300 dirham. Okay, which is around
2000 something. Okay, depending on the conversion rate. So this is how it's good. So ये cost होती है. Okay. अभी ये data flow अगर हम करवा रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया DHA के लिए तो आप पहले भी करवा सकते हैं. What I have done is that I have done after giving the exam, because I want to make sure like once I cleared the exam and then we go for it. Now let's go for the other thing, which is like eligibility. Okay, once you clear the exam, there's a we don't get directly eligible to work there. Okay, so we need that exam result we get. We need to pay for that we have cleared. Now we apply for the eligibility letter that we are eligible to work there. That is around 220, which is Pakistani 16,000. Okay. Sorry, that then 300 must be more than that. Okay, so this is 16,000. Okay. After that, you are eligible to apply for jobs like anywhere in the DHA, like Dubai. And if you meanwhile convert, okay. One more thing, what I have done, it's for that you don't need to come here and then work and then you can convert. For DHA, you have given the exam, you cleared the exam, and then after that, आप simply उसको convert करवा सकते हो, which costs around I think 22,000 you have to pay. That is correct, and that the same data flow, because actually UAE itself verifying our documents, right? So they will not say like it's Dubai this or we don't accepting, so they accept it. Okay, so their data flow report we get it. That is also valid for 3 months. We need to keep it with us while applying for jobs once, because this is only valid for 3 months. 3 months in that valid in sense मैं कह रही हूँ कि जैसे कि आपने once you have to get that document print, otherwise you have to pay, which I don't know, so I have paid double for that. Okay, so okay, second thing आती exam. एग्जाम कब है, कहाँ हो रहा है, और ईयर्स में कितनी दफा हम दे सकते हैं. दिस DHA एग्जाम वी कैन गिव लाइक वीक के 4 days में. पहले इनका ड्यूरेशन होता था लिमिटेड, नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. नाउ वी कैन गिव लाइक 4 days अ वीक एवरी वीक ऑफ द ईयर. सो मतलब आप कभी भी दे सकते हैं. कब बुक करवाना चाहिए, कितना पहले करवा सकते हैं, कितना बाद में करवा सकते हैं, कितना अर्ली कितना लेट. So as soon as you want like to book before 6 months you can book, before 7 months you can book. It's all depend on you. Before 3 months you want to booking, it's your choice. Before 1 month or early as early possible, like if you want to book like okay abhi main kal parson I'm prepared and I want to give the exam, then even आप 4 days पहले भी इस एग्जाम को प्रोमेट्रिक एग्जाम के थ्रू साइट पे हम जाते हैं, तो वहां पे वी कैन बुक द एग्जाम. ओके, सो 3 hours का एग्जाम होता है, 150 MCQs होते हैं. पासिंग परसेंटेज इज DHA की और MOH की मैं बता रही हूँ, which is 60%. Like so it simply means 60 MCQs you can mark wrong. So good chances to get the clear, because थोड़ी strategies 2023 से change हुए हैं, तो अभी ये new updates है. Okay, so this is how it goes. So okay, तो आई थिंक एग्जाम के बारे में अभी अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो एंड में मैं आपके क्वेश्चंस लेने वाली हूँ. प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस लिख दीजिए, सो दैट आई कैन आंसर यू, बिकॉज आई एम ऑल गेट द टाइम टू मेक यू आंसर योर क्यूरीज. ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं मटेरियल. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो मेनी लाइक मिथ्स एंड सो मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट मटेरियल. क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. ओके, मटेरियल जो मैंने खुद भी लिया था और जो मुझे लगा कि विच इज वेरी वेरी यूजफुल इफ यू आर ऑलरेडी फ्रेश ग्रेजुएट एंड आपका 2 years का एक्सपीरियंस आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो एला फाइल्स, ALA. एला फाइल्स, व्हाट इज एला फाइल्स? बेसिकली जो हमने MCQ किए थे, जो मैंने पास पेपर्स मतलब पेपर्स करे थे, तो if I'm recalling and I'm writing it, that is ELA files. That is actually the past papers which recalled by the students, the candidates who have given the exam. एंड ऐसा नहीं है कि उनमें से इफ यू थिंक पास्ट पेपर्स कमिंग लाइक पास्ट पेपर से मिलते जुलते ही आपको देन यू कम टू नो व्हाट इज एक्चुअल सिनेरियोस कैन बिकम. यू गेट द पॉइंट. सो वो आपको 2 to 3 रिवीजन इफ यू आर इन गुड प्रैक्टिस एंड यू आर लाइक फ्रेश ग्रेजुएट, और आप you think you don't need clinical knowledge much more, so that files are enough, and 2 to 3 months time duration is like more than enough to go for this exam if you are giving 3 to 4 hours per day. Again, situation varies case to case. So this is how.
Okay, so but basically exam based on four: medicine, surgery, peds, gynae and obs. Um, if you have seen GP practice, so what they want to like for a GP DHA or GP, this is things. For this, they want like a clinical symptom when to refer, basically like a family medicine. If people, you have done MCPS in family medicine or MRCGP or diploma or MD, anything, this exam like so far easier for you, of course, because it's the same, more and less same thing. Okay, and one more thing, of the people who are like not touching studies and they want to really go through this exam in the first attempt. I also went into this exam by first attempt clearing this thing. So you need to do MTB step 2 CK, right? Yeah, step 2 CK book. That is, you will take as a basic for your like any people who are book want to be some book to read and to like understand the concepts and scenarios, so they can refer that book. I also read that book only, and then LFIs, because I was totally out of touch with the studies since after getting my internship 3 years. So that's the reason I wanted to be make sure to deal it in one go. So this is how it goes. Okay. So this is what, like I told you about the exams, and up till now, this is what going for. Okay, and then before I will tell you something. Cost of exam booking, it also costs 60,000. So 60,000 for the exam fees, 60 more thousand for the, if you are going for a package one data verification, that is also the 60,000. So total cost around like exam, conversing, eligibility letter, and everything verification is around for like starting from to book the exam and get the data flow done. These two things around 2 lakh to 2 and like 15,000, like 15,000 something. This cost like charge you. Next thing, now will come about the attestation of the documents before getting verify them from the. Okay, this is attestation for the job when you apply for job, for that reason only. It's not for the like if you want to apply for the data flow. No. So I don't want to confuse it. I will try to do then another session about the job opportunity. Okay, one more thing, just I'm briefly telling you. Next, I will try to soon, and I hope you will get me faster on this track so that I can don't delay your job opportunities. There are so many jobs. See, like problem is that income, like they are not paying good. Jobs are there, but they are not paying good. And being a doctor now, saturation is there. Yes, that is a true facts. But for the specialist people or they want to apply, I will suggest then if you have done with the post-graduation degree, so you can wait for a 3-year post-year experience if circumstances help you to wait for there. Or otherwise, you could come and start working, and then after getting you can go for as a specialist. Okay. अच्छा, पाकिस्तान की तरह यहाँ पे थोड़ा सा नहीं है that like is if you are applying getting 3 years like जैसे हम वहाँ FCPS और MCPS करके खुद को कंसल्टेंट समझते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. You are simply a GP till 3 years. After 3 years, you have to give the DHA specialist. Even you are done that जो ये लोग समझते और कि हम FCPS कर लिया तो हमारे लिए ट्रेनिंग हो गई, तो हमें like हमें एग्जाम नहीं देना. Then they have to give DHA specialist exam. Exam is basically entering a license exam. It's an entrance of any country to work. So that license, we need to get the exam through that. Okay. So it's not like on interview basis, so they will get you. You can get the interview job, but then again, for that, make secure and go for apply for that, they will ask all these requirements, because this is eligibility letter is required, license is required. For that, you need to go through the exam. So don't get scared with the exam. Just a personal, I'm telling you that exam is not that much difficult. The people, they made it complicated. Process is not that much complicated. The people, they made it. I myself booked my exam by my own, following simple steps, which is already on the YouTube with the DHA Sharia portal and the so many things. Next video, because that video takes me time to upload all, screen, and that because of that reason, I'm not telling you. I don't know. This is the material. Okay, one more thing, one very important thing for the people who want material, right? This is like a very major thing. And
if you guys want, and you just comment on me. So if you want it, then I can do one more thing for you all, that I will make like there's a drive, Google Drive, where the material LF files I'm talking about, penguins, pictures. This is basically we given the file name. You know, if I'm doing something, I will give the Kavita file, something like that. So just don't get confused with the names. Material is same, everything is same. So that is the drive I will share around in my comment pin, so that easily anyone can come and search for the document, for the material as well. Okay, because this is what helped for me, and I really wanted to help you all. That is my motive. So in return, I just want your subscription, like, and share the people who are asking. Here, I usually try to resolve the queries, which is actually real time coming. This is the questions I get it, so I want to try to solve it and answer you all. Sometimes I may get late, but even after I get ending this session, if the questions is like later on, you can comment and I'll answer you, and I'll try to best give my. Thank you. So now you can type the questions. If is there any, I would like to answer. Okay. Abdullah Rashid. Assalamualaikum. Walaikum salam. Okay. Thank you for liking. So any questions if you want from the DHA or this pathway, just let me know. If not, no, not now, and you want to question it later on, so it's okay. But just please, before going back, just subscribe and like and share. This is appreciation from your side, and this boosts me to continue this journey. Thank you. I think so far no questions, so we can just continue this thing.